that laboratories have been implemented, but I don't know about the access that you people have got the access or not, because I also don't have access to them. Okay, so meanwhile, what you can do, you can continue with the syntax link that I have provided for W3 schools. I think you have this, right? Okay. Okay, and there you can find the labs also. You can practice SQL from W3 schools. Okay, you can continue with that. Meanwhile, the labs will be implemented by Skillets. Okay, Geek for Geeks is the Sorry, ma'am. I your question. Ma'am, Geek for is the best option of the platform of the SQL practice. Which platform you are asking? Geek for Geek. Can you write in the chat? I can't be able to understand it. Ma'am, he is saying GFG, Geeks for Geeks. You can go with many other different platforms, but you are asking for practice, right? For Geeks, you in Geeks for Geeks, what you can do, you can just learn the syntax and the concepts from there. Is there any option to take out the labs? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, then you can go for it. No worries. Whatever is suitable for you, you can go for them, right? I solved the SQL assignment for the one platform. They are the so much assignment. 20 question I solve it. So this is the basic problem. Is that? Nice. That is nice. You have started practicing. That is very nice. Okay. Okay, ma'am. Okay. Any other questions you people have? No. Okay. So we can start, right? Okay. So some of you were telling me in the previous classes that we want to understand about the relationships in DBMS, right? So at my screen, you can see some description for relationship in DBMS, and it is a fundamental concept that acts as a basis or the fundamental pillar to understand other parts and concepts of the DBMS and SQL too, because we write SQL in our DBMS, right? So whatever screen is visible at my end, it is MS SQL Server. We are using relational database management system by SQL to interact with our database, our data, and our tables, right? Okay, so relationships can be defined as a parent-child relationship. If we talk about a real life, so what relationship we are having with our father? So it is a father-son relationship. Fine. So between the tables, the relationships are denoted by our many to many relationships and one to many relationships. Okay, so the same thing is here. Similarly, a relationship in DBMS is the way in which two or more data sets are linked. Okay, तो अगर हमारे पास दो टेबल हैं या दो डेटा सेट भी कह सकते हैं, तो वो आपस में कैसे लिंक है, इस एसोसिएशन को हम relationship कहते हैं. Like if I have employee entity and one more entity that is department, so how these two entities are linked with each other, this interlink is called the relationship. Fine. Three specific types of relationship can exist between the tables, and they are explained with the examples below. So as you can see at my screen, there is some description present over there. So types of relationships in DBMS are of one to one relationship, one to many, और फिर इसे हम many to one भी कहते हैं. It depends from where we are viewing it. Like if I have two tables, one is having one to many relationship with the other, then the other one will be like many to one relationship from the first one, right? I will explain this to you with some examples, so no worries. Fine. The last one is many to many relationship, so we are going to see many examples for them.
So a one-to-one relationship means a single record in table A is related to a single record in table B. If I am having table A and table B and some records or some rows are present in both of them, like if I can say that there are two entities, one is person with the columns name, age, address and contact number, and the another entity is Aadhaar card. Okay, so the columns are name and Aadhaar number. These two columns are present in Aadhaar card table or entity. Fine. So each person can have only one Aadhaar card and the single Aadhaar card belongs to only one person, right? तो जैसे एक पर्सन है और हमारे पास जो हमारी टेबल है उसमें नेम, एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरा हमारा जो टेबल है वो आधार कार्ड है, उसमें नेम है और वो नेम पर्सन का ही नेम होना चाहिए, ठीक है, और आधार नंबर है उस पर्सन का आधार कार्ड वाली टेबल में। तो अभी हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखें अगर, तो एक पर्सन के पास एक यूनिक आधार कार्ड होता है, उसका यूनिक आधार नंबर होता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन टेबल। ओके, अब देखिए आधार कार्ड वाली टेबल की तरफ से देखिए एक बार आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आधार नंबर हमारा कॉलम होगा इसमें जो वैल्यू होगी, ओके, सो आधार नंबर will be unique for each and every person that is present in the person table, right? So we can say from the perspective of both the tables, person and Aadhaar card, we have one to one relationship. Okay, is it clear to all? Yes, ma'am. Yes. Okay, now you can visualize the one to one relationship in DBMS. तो अभी हमने रियल लाइफ सिनेरियो की बात की, अभी हम देखते हैं फिर DBMS में ये हमारा कैसे वर्क करता है वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। So this type of relationship is used for security purposes. In the above example, we can store the Aadhaar card number in the same entity person. अभी हमारी जो person entity थी, इसमें आप देखिए name, age, address, contact number के बाद आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार नंबर नहीं है, लेकिन हम इस आधार नंबर को जो कि आधार कार्ड वाली टेबल में स्टोर है, इसे पर्सन टेबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। So that is the reason this relationship type is not in very much use in DBMS, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर पर्सन वाली टेबल में स्टोर हो सकता है और वो हर पर्सन के लिए यूनिक होगा, तो हमारी रिडंडेंसी भी नहीं बढ़ेगी। आगे जब ज्वाइंस आएंगे तो हम ज्वाइन करेंगे या कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करेंगे तो डेटा की रिडंडेंसी और डेटा का जो लोड होगा वो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि वन टू वन रिलेशनशिप है और हम सेम टेबल पर्सन के अंदर आधार नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। So but we created another table for the Aadhaar card because the Aadhaar card number may be sensitive data and should be hidden from others. यहाँ पे अलग अलग क्यों किया हुआ है इन्हें? Because of the sensitivity of data, for the security purpose we want to hide it from the others. Okay, so let's take another example with the databases. Now let's say I have table A with employee ID, employee name and employee address. So you can see some kind of tabular structure at my end where employee ID has three, this column has three records 001, 003, 005 and corresponding employee name and employee address. Fine. Now you can place the employee address in a separate table. अब ये जो employee address आपको यहाँ पे दिख रहा है employee table के अंदर, इसे हम दूसरी टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं। Okay, now you can see here. So the two tables that I get after removing employee address from table A is employee table and employee address table. Fine. So in employee table I have employee ID, employee name, employee address ID. Okay, this employee address will be in the employee address table with the corresponding employee address ID. Okay, so you people can see it, visualize it, analyze it and let me know if you can understand what is happening with these two tables. Ma'am, in the employee table, the employee ID is a primary key.
since each of the employees each of the employees row will be represented by itself by employee ID, because it is unique for each row. And in the second employee address, this employee ID can be used as a employee address, but employee name, employee address ID. Okay. Also the employee address ID, I think in the employee table is also a primary key, because each of the employee could have only one address. In the second table, this employee address ID, but here it is not acting as a foreign key employee address, because in both the tables, the employee address ID is also primary key ID. Okay. Okay. So let me discuss it with you people. This employee table, we have removed the employee address. As you can see in table A, employee address has been removed from here and employee address is present in this table, employee address. Okay. But we included one more column in as employee address ID in employee table and in employee address table. This one. Okay. This employee address ID is also present here. Okay. So what we have done, we remove the employee address from the table A and a new table has been formed, employee address table. Okay, so if we want to join both of these tables, we need to take one more column, that is employee address ID, that is present in both of the tables. Okay, now the relationship that will be occur in these two tables is through the employee address ID, right? Because this is the common column present in both of them. Okay. Now the relationship between the employees table and employee address can be created. In the above example, one employee address ID belongs to only one employee address. Okay. So this employee address ID 901 is unique here, and we have one employee address corresponding to the ID 901. Fine. Yeah. So this relationship is a one-to-one relationship. This type of relationship is not very common, as the employee address can also be included in the employee table as shown in table A, and this would work too. Fine. वर्क करेगा ना ये? अगर टेबल ए में मैं एम्प्लॉय एड्रेस को रहने देती हूँ और इसे चेंज नहीं करती हूँ, दो अलग अलग टेबल नहीं बनाती हूँ, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करती हूँ, तो क्या होगा? टेबल ए जो हमारा होगा उसमें ही हमारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी और एम्प्लॉय एड्रेस भी उसी में प्रेजेंट होगा. फाइन. लेकिन अगर मुझे सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज के एड्रेस को अगर किसी दूसरी टेबल में लेके जाना है, तो मुझे एक नया कॉलम दोनों ही टेबल में बनाना पड़ेगा और दोनों ही टेबल में वो एम्प्लॉय एड्रेस आईडी रिलेशनशिप का वर्क करेगा. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप. अगर हम एम्प्लॉय टेबल की तरफ से देखें तो यहाँ पर आप देखिए एक एम्प्लॉय एड्रेस के लिए, लाइक द लास्ट वन 23 सेंटा क्रूज रोड and Y44303, for this employee address I have only one employee address ID in my employee table, right? So you need to visualize the data also. Okay, apart from the table structure, you need to visualize the data also to see how the relationships are working in these two tables. ठीक है मैम? अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? मैम डाउट नहीं है, पर मैम एक चीज कहना चाहूंगा, आपने थोड़ा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता दिया. इसको और आप सिंपली बता सकते थे कि एक टेबल में एक रेफरेंस कॉलम है, दैट इज रेफरेंसिंग द प्राइमरी कॉलम इन द सेकंड टेबल. राइट मैम? हाँ, तो आपको समझ आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. I understood, but I'm just saying कि it could have been a little more simpler. Okay, fine. Thank you. Anyone else who is having any doubt? Okay. Now we will see one-to-many relationship. One second.
Okay, so let's see about one-to-many relationship. Such a relationship exists when each record of table A can be related to one or more records of another table, that is table B. However, a single record in table B will have a link to a single record in table A. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें तो जो हमारी टेबल ए है वहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी टेबल ए में जो एक रिकॉर्ड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल बी में मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वन और मोर. ओके फाइन. लेकिन अगर टेबल बी की तरफ से देखें तो हमारे टेबल बी के लिए जो एक सिंगल रिकॉर्ड प्रेजेंट है टेबल ए में कॉरेस्पॉन्डिंगली एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा. ओके, इट इज वन टू मैनी. फाइन. So this is the most common relationship you will find that is widely used. Okay, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल हम लोगों ने पिछले हमारे लेक्चर्स में देखा था, तो आप देखेंगे कि एक एम्प्लॉय के लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली डिपार्टमेंट टेबल में एक रो होता है. ओके, क्योंकि हमारे लिए जो है एम्प्लॉय का एक ही डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा एम्प्लॉय प्रेजेंट होते हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा. फाइन. A one-to-many relationship in DBMS can also be named a many-to-one relationship depending on the way we view it. तो अगर हम टेबल बी की तरफ से देखें तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? इसको थोड़ा मैम एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझा देते तो थोड़ा बेटर समझ हाँ, में आता, देखिए विजुअलाइज. मैंने अभी एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल का. ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय टेबल की तरफ से देखते हो, ठीक है, तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं उनका एक ही डिपार्टमेंट होगा. एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट है. ठीक है, फाइन. लेकिन आप डिपार्टमेंट टेबल की तरफ से देखिए तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं पहले हाँ ठीक है, कहिए. समझ में आ गया. मतलब अगर मैं एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट से लिंक करूं तो एम्प्लॉयज कई सारे एक ही डिपार्टमेंट से लिंक हो सकते हैं. अगर मैं इधर से रिलेशनशिप बनाऊं, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से बनाऊं तो ये तो मैनी टू वन हो गया. बट अगर मैं एम्प्लॉय की तरफ से बनाऊं तो वन टू, डिपार्टमेंट की तरफ से बनाऊं तो वन टू मैनी हो गया. पर अगर एम्प्लॉय की तरफ से बनाऊं तो मैनी टू वन हो गया. It is depending upon how we view it, how we understand it. आपको समझ में आ गया है? ठीक है, नहीं, मैनी टू मैनी में लाइक वन टू मैनी. हाँ मैनी हाँ, टू वन. मैनी अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके ओके, ठीक है ठीक है, वन टू मैनी. हाँ, अभी हम लोग वन टू मैनी को देख रहे हैं. और वन टू मैनी को एक और बात है, वन टू मैनी को मैनी टू वन भी कह सकते हैं अगर हम दूसरी साइड से देखें. ठीक है, फाइन. यस. वन टू मैनी को मैनी टू वन कह सकते हैं, ये सबको समझ आ गया? कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? एनी डाउट इन दिस? नो. ओके, okay. So the one-to-many relationship in DBMS exists between the pair of tables if a single record in one table is related to one or more records of the other table. For example, if there are two entities, let's see the example of customer and account here, then each customer can have more than one account, and also each account is owned by one customer only. Okay, so you can see these two lines. We have one more example for this, customer and account. So if we are taking customer table first, so each customer can have more than one account. एक customer के एक से ज्यादा account हो सकते हैं ना. ठीक है, तो हर customer के लिए वहां पे many rows हो सकती हैं, more than one हो सकती हैं. ठीक है, अगर मैं account table की बात करूँ तो each account is owned by one customer only. लेकिन अगर account की तरफ से मैं देखती हूँ
तो अकाउंट टेबल में एक रो के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रोज कस्टमर टेबल में एक ही होगी, because each account is owned by one customer only. I think you got this. Same thing as we discussed with the employee and department. We can link with it customer and account tables. Yes. Fine. Okay. You can visualize the one-to-many relationship in DBMS. Consider a table of customers and orders as shown below. So we have the customer table with us with the data and orders table also. The relationship between the above two tables can be like, you can see for the customer ID 111 here, we have only one row in orders table, right? Okay. And for the customer ID, this 222, we have two different rows, right? Customer ID 222, oh sorry, three different rows, 222 and 222. Fine. Now, if we can see for the order ID, for order ID, one second now. Yeah, 10,001. Yes, it is 10,001. We have customer ID 222 here, and for 10,005 we have customer ID 222. For 10,003, I can see 222 itself for customer ID, right? So one customer 222 can have multiple accounts or multiple orders in the orders table, right? Yes, ma'am. Okay. For the customer ID 222, if I can see the orders table, for the customer ID 222, I have only one customer ID 222 here in this table, right? Only one row. Okay. So it is a one-to-many relationship. Are you people getting with this example? Yes, ma'am. So for example, the primary key here is the customer ID. The foreign keys in that order table is customer ID. Yes, correct. And the Got it. primary key for the orders table is order ID, but it is not a foreign key for the customers table, right? Yes, got it. Okay. So any questions from you people? No. Okay. So we are on the right track. Fine. Ma'am, I have one question. Okay. Ma'am, why we are focusing on this relationships? Do we have like any practical use of this? In writing the query, do we need to mention any relationships within two tables? No. The Then relationship. what is the use of this But we relationships? do need It is to a mention. DBMS. Yeah. Actually, it is a part of DBMS. Also, it is used in backend. Most wide use is in backend for making classes. So unless and until you understand this, you won't be able to understand how backend work. Because actually, we are reading data analytics, but actually in the companies, that is also a web product. Means we have to deal with something related to technical part. So we also should know how websites work. So in the backend, you will, when you face any project or you will work with a project, then there it is mostly used, because we have been assigned a project in previous DSA classes. So when I started a project, I faced a lot of difficulty in how this is linking. So that's why. Basically, it is used to like make ER diagram now. No, but we have to also make joins, na? Ma'am, we have to also make joins, right? So that is the reason of understanding relationship between tables. You just cannot say that because of the backend purpose, because when you'll be writing queries, we have to also get into joins, which will be coming after this. Yeah, there also. Ma'am, like in SQL query, when we are writing any joins, we need to mention these, we need to understand these relationships, like one to many. If
I'm writing a query like select star from customers, join orders based on customer ID equal to customer ID. There we don't need to understand whether the relationship is one to many or many to many. But to get which join you need to apply, you need to see the data and check the relationship, type of relationship between the tables. भाई तरह तरह के जॉइंट्स होंगे जो मैम आगे जाके बताएंगे, तो दैट विल गिव मोर क्लैरिटी. Joins I have discussed in the previous classes. अच्छा, ओके. You were not there? No ma'am, I was not there. Okay, joins has been completed, but we can revise if some people have any difficulty. Actually, bro, there are two kinds of way to interact with the SQL. Means SQL is a DBMS which already has its internal function which interacts with the storage system. Means where actually the data is stored, but we instruct the SQL so that it activates its function. So there are many ways. One way is this SQL, which ma'am is teaching us, queries form. When similar to it, when you pass your queries through Django or any other backend platform, there this relationship is means mostly used. Can you give me any example like in the Django? I can show exactly? you. I can show you. Well, ma'am, if I have a permission, can I show? One second, Vinod and Tapas. So you both can continue this conversation in a different call. Okay. Because I think most of the people have understood about this, why we need relationships. And Vinod, if you want an answer from me, why we are reading about this, it is just because we are learning about SQL. That is how we can interact with a DBMS, right? How we can interact with our data, how to fetch the required data, right? So in what form our data exists in the DBMS, we need to understand this also. ठीक है कि अगर आपको ये थ्योरी लिखना है कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए और वो मल्टीपल टेबल्स में है, तो आपको टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना पड़ेगा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी करना पड़ेगा. आप आगे जाके कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करोगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज करोगे. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा टेबल्स में जो डेटा है वो कैसा है, कैसे ठीक लिंक है, है. आपस में टेबल्स कैसे रिलेटेड है. राइट. तो उसके लिए ये चीज होता है कि अगर टेबल में 1-to-1 रिलेशनशिप है या 1-to-many रिलेशनशिप है, तो अगर मैंने कोई ज्वाइन लगाया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी रोज आएंगी. जैसे मेरा एक कस्टमर आईडी के लिए 111 के लिए अगर मैं कुछ ज्वाइन लगाती हूँ ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी में, तो 111 कस्टमर आईडी के लिए कितनी कॉरेस्पॉन्डिंग रोज आएंगी. तो वहां पे अगर डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी ऑफ डेटा होती है और मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको आगे जाके चेंज कर सकती हूँ अपनी क्वेरी को. तो वो तभी पॉसिबल है जब मुझे ये आइडिया होगा कि मेरे पास डेटा कैसा है, टेबल में रिलेशनशिप्स कैसे बनी हुई है. ठीक है मैडम, इसके ऊपर आप कुछ और और थोड़ा डीप में एग्जांपल दे सकते हो कि अगर मेरे पास इस तरीके से डेटा है तो मैं ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप यूज कर रही हूँ, मेरे पास उस तरीके का डेटा है वो तो ऐसा नहीं है. वो आपको कैसा डेटा चाहिए उस पर डिपेंड करता है. डेटा तो है, वो तो एग्जिस्ट करता ही है, वो तो बैठा हुआ है एक जगह. हाँ, तो आपका जो मोटिव है या आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको डेटा कैसा चाहिए, अभी आप आगे जाके पावर बीआई में ग्राफ्स बनाओगे, चार्ट्स बनाओगे, तो उस चार्ट में आपको कैसा डेटा दिखाना है. कस्टमर आईडी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर आईडीज दिखानी है, हर कस्टमर के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाने हैं, ऑर्डर अमाउंट का टोटल दिखाना है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी टेबल्स में डेटा कैसा बैठा हुआ है और हम कौन सा उन दोनों के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर कैसा रिलेशनशिप है. तभी हम क्वेरीज को आगे एनालाइज कर पाएंगे कि हमें ये क्वेरी लगानी पड़ेगी और हमारे पास ये डेटा आएगा. यू गॉट इट? ठीक है मैम, लेट्स सी. ओके, सो वी कैन कंटिन्यू or anyone who wants to add something to it. Shamik, you were saying something. No ma'am, I was reiterating what you said. मैम, अगर टेबल का रिलेशनशिप नहीं समझेंगे तो द आउटकम दैट वी आर लुकिंग फॉर वो सोल्यूशन नहीं लिख पाएंगे.
So that is the entire gist. That is the entire reason we have to understand how tables are linked to each other based on the solution that we're looking for. And that's what you said like few minutes back. Yeah, absolutely correct. So, ma'am, mostly what I understand is to design a particular database, we need to understand these relationships within the tables, right? I mean, if I want to convert the data into a specific tables, and then if I want to mention the relationship between the data, then the ER diagram is useful. And this Yes. one-to-many and many-to-many relationships So are if useful. you people are going with the role of data analyst, you no need to create any database. Database आपको तैयार मिलेगा जो डेटा इंजीनियर ने पहले से तैयार करके रखा होगा. ठीक है, आपको सिर्फ उस डेटा को उठा के लाना है और जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में उठा के लाना है अपने चार्ट को पॉपुलेट करने के लिए. ठीक है, लेकिन डेटा इंजीनियर ने उस डेटाबेस में डेटा कैसे डाला है, टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसा डेटा इंटरलिंक करता है दोनों टेबल्स को या मल्टीपल टेबल्स को, वो समझना इसीलिए जरूरी है. हाउ वी नीड टू पॉपुलेट आवर चार्ट्स. If you are looking for a data engineer role, then you have to create and implement databases. You need to create pipelines between the databases to fetch all the data, to retrieve all the data in Power BI or Tableau or anything else. Okay, fine. Yes, ma'am, we can move further. Vinod, any other question? No, ma'am, we can move further. Okay. So abhi, yeah, we have already seen about one-to-one and one-to-many relationships. There is one more example. I know the same example is explained in this description. Let us have a look over it. Okay, then we'll move to many. Okay, so in this example, there is a one-to-many relationship. If we looked at from the perspective of the customers, as shown above, the customer ID 222 is related to the three different order IDs, right? That I had already explained to you. 222, 222, and 222. Okay, so 10,001, 10,003, and 10,005. These three order IDs are corresponding to the customer ID 222. Okay. In a similar way, there is many-to-one relationship between the tables if we looked at the perspective of the orders table. Fine, वो हम देख चुके हैं ऊपर, तो आगे चलते हैं. ठीक है. There is one question for you people. In a one-to-many relationship in a database, what does each record in the first table relate to? One record in the second table, no records in the second table, one or more records in the second table, and none of the above. Which one is the answer for this question? Third one. Yeah, correct. So you people understand this, right? Yes, ma'am. Okay, we'll move further then. Now, many-to-many relationships. A many-to-many relationship exists between the tables if a single record of the first table is related to one or more records of the second table and vice versa. Okay, second table से भी one or more record होना चाहिए first table में, right? And a single record in the second table is related to one or more records of the first table. Okay, अगर हम first table से देखें तो more than one record भी हो सकते हैं और one record भी हो सकता है second table में, right? और second table से I have a देखें doubt. बताइए. One-to-many you are saying, right? In that you are saying in the second table there should be one or more records. So if there can be a customer which haven't purchased yet or something like that also scenario will be there now. Where You are asking the doubt from one to many, right? correct. Should we go back? Oh, wait. Let me go back. In that question only, in one-to-many relationship. So you are saying in the second table, it can be one or more records can be there. The question is, what does each record in the first table relate to? Okay, तो second table में one record होगा
whether it will be one record in the second table, no record in the second table, or one or more record in the second table. Because it is a one-to-many relationship, so one row or one record from the first table will be related to more than one or one record in the second table, because it is Okay. one to many. Okay, I understood the question. Thank you. You got it? Yes, yes, yes. But ma'am, So there is a answer, possibility that कि some कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होंगे जिनकी सेकंड टेबल के अभी रिकॉर्ड आए ही नहीं है. लाइक कोई कस्टमर है जिसने अभी परचेज ही नहीं किया था, उसके सेकंड टेबल में ऑर्डर ही नहीं है, बट उसका रिकॉर्ड तो फर्स्ट टेबल में तो है, तो देयर Right. विल बी नो रिकॉर्ड आल्सो पॉसिबिलिटी. करेक्ट. अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करा तो कस्टमर कैसे हुआ बताइए? लाइक उसने साइन अप तो कर लिया अकाउंट, एंड साइन अप करने से वो हाँ, तो तो उसका जो डेटा है वो कस्टमर टेबल में प्रेजेंट होगा. बस ऑर्डर टेबल में Yes. उस कस्टमर टेबल में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग. यस मैम. तो तो ऑर्डर टेबल में तो कुछ भी नहीं है उसके लिए. ऑब्जेक्ट ऑर्डर उठेगा ही टेबल नहीं में ना. कुछ नहीं है, तो कस्टमर टेबल अपनी जब फर्स्ट टेबल है, ऑर्डर टेबल अपनी सेकंड है, तो उसके लिए तो नो रिकॉर्ड हो गया ना साथ में. तो वो उठेगा ही नहीं हाँ, ना. उसको जब हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई तू ये ऑब्जेक्ट उठा, पहले टेबल में जो ये है इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड टेबल में देख, तो उस ऑब्जेक्ट को तो लेंगे, उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हम उठाएंगे ही नहीं सेकंड टेबल से, क्योंकि हमें पता है उसको एरर देना है वहां पे, तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे ही नहीं. वो आप जब क्वेरी लिखेंगे ना तो वो रिकॉर्ड फेच नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नल फॉर द ऑर्डर आईडी. In place of order ID, you have null in the customer table, right? Okay. Correct. So there will be no record fetched from the orders table for the corresponding customer. Ma'am, can I add here? You got it? Is anyone saying something? I can't hear you. I got it. I got it. Thank you. All of you? Yes, ma'am. अभी एक क्वेश्चन किसका था कि नो रिकॉर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, उन्हें समझ आ गया? Yes ma'am. Okay, thank you. Thank you. Do you want some more explanation? You can tell me. No. Okay. Fine. Then we need to discuss many to many. Okay. Let me start from the start. Okay. Many to many relationship exists between the tables if a single record of the first table is related to one or more records of the second table, and a single record in the second table is related to one or more records of the first table. तो हमारी फर्स्ट टेबल का जो एक रिकॉर्ड है वो भी मोर देन वन और वन करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हो सकता है सेकंड टेबल में. ठीक है. और सेकंड टेबल के लिए भी ये सेम चीज अप्लाई होती है. अगर सेकंड टेबल में देखेंगे तो उसका जो एक रिकॉर्ड है उसके लिए फर्स्ट टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं और वन रिकॉर्ड भी हो सकते हैं. फाइन. ओके. So for this we need to take an example of student table and courses table. तो मैं पहले आपको समझाती हूँ कि देखिए स्टूडेंट अगर हमारे पास एक टेबल है और एक कोर्सेज टेबल है, so one student can apply for multiple courses, right? तो स्टूडेंट की तरफ से देखते हैं. If we see from the perspective of the student table, there will be multiple rows or records in the courses table, right? ठीक है. और अगर एक कोर्स है उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या, होते ही हैं मोस्टली. ओके. तो अगर इफ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्सेज टेबल, इफ वी हैव वन रिकॉर्ड in courses table, then for that particular course ID there will be multiple students enrolled with that course ID, right?
Is this a suitable example? Yes, ma'am. Okay. So consider the tables A and B in a many-to-many relationship. Each record in table A can be linked to one or more records in table B and vice versa. Okay. It is also represented as an N relationship because it is many-to-many. So we can write as an N relationship. Okay. So one-to-many we can write as one N relationship. For one-to-one we can write as one relationship, and for many to many it will be an relationship. Okay, for example, consider the two tables, that is student table and a course table. A particular student may enroll himself in one or more than one course, while a course also may have one or more students. So it is many to many from both the sides, from the course side or from the student side, right? Hence it is a great example of many to many relationship. You can visualize the many-to-many relationship in DBMS like a many-to-many relationship from the perspective of table A. First example of many-to-many relationship between the tables. A many-to-many relationship from the perspective of table B will be the second example of the many-to-many relationship between the tables. Okay, so these will be the two examples, right? So from the perspective of table A, it will be many to many. From the perspective of table B, it will be many to many again, right? So it can be called as the second example. Okay, you got this point? Yes. There is one example we have for many to many relationships and how we can visualize them in DBMS. Okay, so the tables are orders, items, and one more table is created here to establish the relationship between these two orders and items. So the third resultant table will be items, orders. Okay, you can see it here. Fine. So we can see orders table with its data as order ID, order amount, and customer ID here. Items table with item ID and item name. This one. Okay. Now, if I want to establish a many-to-many relationship between these two, how we can go with? Let's see. For the orders table, order ID 10,001. Okay. So for order ID 10,001 in items order table, okay, we have two rows here. So two corresponding item IDs are present, 1201 and 1203, right? Fine. So for order ID 10,001, we have two items, 1201 and 1203. So it will be a many to many relationship if we see from the orders table, right? मैम इसमें ना जैसे ऑर्डर आईडी एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, उस कस्टमर की ऑर्डर आईडी थी, मतलब पहली टेबल जो ऑर्डर्स है उसमें देखेंगे तो उस जैसे मान लो 222 वाले कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसकी ऑर्डर आईडी थी 10001 और उस ऑर्डर में क्या कंटेंट है, मतलब उसने उसमें क्या Item. क्या आइटम है, मतलब जो भी, तो वो आइटम उसमें दो आइटम है, एक तो 1201। No need, 1 second. You no need to customer ID here. No need to consider this. Okay. नहीं मैं You ऐसे नहीं, just मैं ऑर्डर आईडी कंसिडर कर रहा हूँ। तो उसमें दो आइटम है 1201 और 1203। तो अगर हम ऑर्डर टेबल के परस्पेक्टिव से देखें तो इसमें एक ऑर्डर आईडी से दो ऑर्डर लिंक हो रहे हैं या दो आइटम लिंक हो रहे दो हैं। आइटम लिंक हो रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया वन टू मैनी। और अगर हम ऑर्डर के परस्पेक्टिव ये आइटम्स ऑर्डर, ये जो तीसरी टेबल है इसके परस्पेक्टिव से देखें तो ये हो गया मैनी टू वन। तो ये मैनी टू मैनी कैसे इसमें जस्टिफाई हो रहा है, मतलब देखिए, you can see this one record 10,001 here. हाँ, right? Okay. So we have many records here in item ID. Okay. हाँ, 1 to मैनी। 1201. हाँ, ओके, ठीक है। तो 10,001 के लिए यहाँ पे ये है, ओके, ये दो है। ओके, Okay. ओके, Now see for 12,001 here,
sorry, 1201 here, this item ID. Okay, 1201 here. How many 1201 here? 3. Multiple, na? Multiple 1201 here. So 10,001, 10,005. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब दूसरे कस्टमरों ने भी तो वही आइटम ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब ये कहने का मतलब है कि बाकी कस्टमर भी तो ये ऑर्डर वो ठीक है। अच्छा ऐसे, तो ये हो गया मैनी टू मैनी। ठीक है ठीक है, ओके Can we आगे। continue now? यस मैम। Actually, the problem is not a problem. हाँ, मतलब कह सकते हैं, लेट मी कंप्लीट द कंसेप्ट फर्स्ट, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। हो सकता है मैं आगे वो चीज बताने जा रही हूँ, है ना? ओके Okay, fine. So, so I need to complete this, or you people already understood? बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है. So for 10,001 this order, we have two rows here in item orders for item ID 1201 and 1203. Okay. In items table, let's see this 1201. Okay, because in 1200 this item ID 1201, in items order table we have 3 rows. Okay, for this 1201, 10,001 order ID, 10,005 and 10,003. So it will be a many to many relationship. Fine. Okay, the relationship between the above two tables can be visualized as an example in DBMS. As shown in the above example, the table item orders have only one purpose, that is to create many to many relationship between the items. Okay, so we only have these two tables earlier, but we see the relationship between these two tables will be many to many. So a third table will be created to create that relationship or to define that relationship, item orders. Okay, I have explained how the relationship works. Now, a question for you. In a many to many relationship, how are the relationships typically represented in the database schema? Okay, so using separate tables to establish the relationship, that we already did here, right? So it is the correct answer, but we can go for other options to understand. Using foreign keys in one table to reference primary keys in another table, no, we can't do that because it will work only in the case of one to many relationships. Primary keys are always unique and not null. Okay, using primary keys in one table to reference foreign keys in another table, and none of the above. So the answer will be using separate tables to establish the relationships. Okay, I think you got the answer for this many to many relationship question. Okay, so let's see the conclusion. Here we are summarizing about all the three relationships that we have studied so far. The relationship in DBMS is the most essential or fundamental part of its functioning, and there are three types of relationship available in relational database management system. If relationships would not have been there, the entire database structure would become useless. A one-to-one relationship means when a single record in the first table is related to only one record in the other table. Fine. A one-to-many relationship is defined as when a single record in the first table is related to one or more records in the other table, but a single record in the other table is related to one or only one record in the first table. Okay, a many-to-many relationship can be defined as when a single record in the first table is related to one or more products in the second table. Okay, sorry, it should not be the product, it will be a record. And a single record in the second table is related to one or more records in the first table. Okay, if you people want to read it and understand this conclusion, you can, and let me know if any doubts, then we will move further.
Can you explain the last point? A single record in the second table is related to one or more records in the first table. Yes, it is for many to many. Yes, yes. Can you explain the last point only? Like that is little confusing. So we can see the example here also. If we talk about the second table, you want to answer me for the second table, right? See one record for the second table. Here the second table is items, right? First table is orders, right? So see one Yes. record in items table, single record, that is 1201. Okay. Mhm. Now see in the relationship table. This is a relationship table for the many to many relationships. For 1201, how many records you have? You have 3, right? For 10,001 order ID, 10,005 and 10,003. Okay, so they are many, not one. They can be one also. Okay, let's see this. For 1202, we have only one, only 10,004, right? Yes. But for 1201, we have 3. For 1203, we have 2. You got this point? Yes. Okay. Yes, yes. So we With the have help 3 of this tables. example, So that we have 2 tables basically, but to establish the relationship, we have defined or created the third table also. okay. Okay, got it. Yeah. Thank you. Ma'am, this is for our visualization or for like in SQL it gets created. Which relationships? No, the third table you showed, which was showing relationship many to many. No, we need to create it to relate items and orders, right? Okay. What is present in orders table? What is present? Which order with what amount has been placed by which customer, right? Okay. What is present in items table? Which item with which item name? One is item ID, one is item name. How we can know about this, that which order is placed for which item? Ma'am, So we we need this write third some table, items and orders. Huh? we write some Sorry? query for this relationship. No, we just need to define our data. Correct? Okay. Ma'am, what she wanted to ask is, When I we think, create, one yeah, second, sorry. sorry. I just want to complete that answer. Yeah. Okay, then I will take your query. So when we define some database, when we create some database, first of all, we need to understand what entities we have with us. Okay, when we understand the entities, then we need to first create the entity relationship model. Okay, so when we create this ER diagram, we define the relationships there only. And then we create the tables in the database, then we insert our data. And then whenever database is created and it is completed, then we start fetching the data, the required data from it. Okay, you Okay, got ma'am. it? Actually, in Python, in Django, we have a separate models.py where we like explicitly mention that this is many to many and one to one. So I was Exactly. just asking, like we do it through in SQL through ER diagrams only. We don't write any SQL queries for that. Like Yes, yes. okay. Yeah. That is a programming platform, right? Like Ma'am, there also. there also we are doing the same thing. Like here we are passing queries to the DBMS SQL through this MySQL or SQL server. There also we are passing queries to the same DBMS, but through the programming language. So it will be a programming language. We need to explicitly define there. Okay, but the database, where your database exists, if you are giving some SQL query
to a database through a program, then in that database that is already existed, the relationships have been already created, right? तभी तो वहां से आपका डेटा फैच होके आएगा. Yeah, Your ma'am. database is already been created there. Or if you are going to create your database through the programming language, then also you can define these things in your programs. Yeah, we define it in models.py. Okay. Inside the classes. Means classes are the same thing. Classes, when we So create you the are class. creating the database through the programs, right? Yeah. Okay. Ma'am, so for maintaining these relationships and creating this relationships, we do only through ER diagrams, right? In DBMS, okay, I'm not talking about any other programming language. I have no experience with Django. I have experience with C Sharp. No, Yes, no, C yeah, Sharp. I'm talking about this only, DBMS only. We do it through only through ER diagrams. Yeah, and the data we are fetching into it, it will take from there. Okay, okay. Yeah. Okay, so each and every programming language has its own classes and libraries, and to do something in a different way, there are some protocols we need to follow. Okay, but this is the concept. Actually, it will go everywhere, whether it is C Sharp, whether it is Django or Python or anything else. Many to many relationship means same everywhere. Okay, that I am telling you, it will be same everywhere. Just to add to all this, what I understand is when Can we you have. speak somewhat louder? I can't hear Yeah, you properly. can you hear me now? Yeah, tell me. Okay, just wanted to add a little bit here. What I understood is when I create a one-to-one relationship, I may only create a one foreign key. And when I create many-to-many relationship, at that time, while creating this items orders, I create the two foreign keys here to define many-to-many relationship with orders and items. Am I right? Yes, yes. Oh, okay. One foreign key for order ID, one foreign key for item ID. Right. That constraint you are asking for, right? Yes, yes, yes. Yes, yes. Foreign keys can be multiple in a table. Primary key should be one only. You got your answer? Yes, ma'am. Okay. Okay. Anyone else who wants to add something into this? Or you want to ask something? No, no. Okay. Okay. Fine. Then we shall move to a new topic, basic subqueries. Let me open the file and share the screen. Wait. Ma'am, instead of writing in this Microsoft SQL Server, can we do it in PostgreSQL? Can you teach in Postgres? Why so? Because Postgres is mostly like a requirement in most companies. If you learn it in MS SQL Server, the same will be applicable to PostgreSQL. Yeah, it is same, but there's slight difference in syntaxes. Syntax, you can go for syntax through Google or anything else. The concepts will be same. Yes. I haven't have this installed at my system, and I don't want to give extra load to it. Okay, ma'am. For Postgre, I have to go with PG admin and the PostgreSQL server, right? Correct, we do, but if that was So done, let's it would have been more convenient. Okay, ma'am, I got you. let, Fine.
this question I have already discussed with you initially, that I need to go with MS SQL Server just because it is already installed at my system, and most of the things we have covered in this only, right? So in between, if we need to switch to Postgre, it will be difficult for some of you, right? Yes, ma'am. Got you, ma'am. It's fine. I'll see the post report. And one more thing, you should be flexible enough. Okay, if there is some company where you just assume you have cleared all the interviews and you are having an offer letter in your hand, can you reject it just because it is using MS SQL Server? No, na? No, ma'am, that is not what I was saying. I understand, like any SQL we learn, it's almost similar, but there is slight syntax variation in each one. Let's Huh. say Postgre and this Microsoft SQL. But if you see, most of the companies, the requirement is mostly Postgre. Like very few go No, for. it is not. No. This is not the case. Most of the company, they are using according to their choices. What are their requirements? Okay. Right. So it is not the case that most of them are using, or the majority companies are using Postgre. It is not the case. Okay. So many are using others also, MySQL and others also. So we can't say that majority of them are using only that one. Okay. If I need to switch my organization and I have to work with Postgre, like I am working with Postgre in my current company, but it is not at my system, it is on the cloud. So I use dbeaver for it to connect with it. If it will be on my system, then there will be a heavy load. Ma'am, I Right? got you. And you can continue, ma'am. It's okay. Okay. So we are going to discuss about this subqueries. A subquery is basically a query into another query. Okay. So we'll see it further. A basic subquery is a simple standalone query embedded within another query, typically used with select, from, or where clauses. It is executed once and does not depend on the outer query. It is for basic subquery only. But whatever I have written here, it is not applicable for correlated queries, because the inner query will be depend upon the outer query. The example we will take in the last for correlated queries when we will discuss them. But now for the basic subquery, you can see it is executed once and does not depend on the outer query. Fine. Let's talk through some basic subqueries in SQL. Okay. Starting from creating tables and inserting data. First, I am creating departments and employees table here in my database data. Let me select database data here. Right. Let me create the two tables. Fine. Let me see if it is working fine or not. Okay. Now we'll insert the data. Only smaller data and fewer records will be there for you to get the clarity. Okay, so let's see the first example, how we can write a subquery, that is basically a query within a query. Find the names of employees who earn more than the average salary. Okay, let me get you through the tables first.
Okay. So this is employee table and the below is the department table. We have 5 employee IDs. We have 3 department IDs with HR, IT and finance. In employee table, we have employee name, department ID and their salary. Fine. Okay. So what we need to find here, we have to find the names of employees who earn more than the average salary. So for that, we first need to find out the average salary from the employees table. Okay, so we can write one query, select average salary from employees. Correct? Right? We can do this to find the average salary of all the employees data present in the employees table. We can write this query. Is it clear to all? Select average salary from employees. Anyone can answer. Huh? Okay, I'm assuming it is clear to you. Thanks. Like as a new query, like how you write it? Sorry. Can you write and explain it? How you write the query? Because it's not This one. understandable. This one. Yes, ma'am. Like Okay, explain so and we then have I'll write it. employees table. We have employees table. I show you, right? Okay. This employees table, right? If we want the average salary of all the employees, then what we should write here, select and then the aggregate function average, and within the function the column name, that is salary, from the table name employees. Means you Is it have clear written now? the first query of this one. Like this is the first query you have written, then second query you have written. No, I am just explaining you how you need to find the average salary. Just focus on this, only this point. Okay. Yeah, we need You to have find written the that names query of first. employees. We need to find the name of employees who earn more than the average salary. So what we need to do first, we need to first find out the average salary, then compare the employee's salary to it, right? Okay, ma'am. Yeah. So this query, this sub query, okay, why is it called a sub query? Because it is written under one main query, okay, this one. Okay, so this sub query I'm asking, is it clear to all of you that is selected at my screen right now? Yes. Yes, ma'am. Okay, wait. Okay, now we have got this average salary from employees table. Let me run. Yeah. Okay. Now if we need to find out the name of employees who earn more than this salary, this is the average one. What we have to write, select employee's name from the employees table where salary column should be greater than this average salary. Is it Ma'am, right? how by writing the average function outside the salary parameter, it has automatically means taken the average of all the 5. Yes, because we don't use group by here. If we use group by some department or something else, then it will only take the average salary of that particular departments. Okay, but now it is doing the average of all the employees' salary. Okay. Okay. Okay, so I am using this inner query, this sub query with the outer query, okay, in select clause. Okay, let me run. So the employee names Bob and Charlie are the employees which are having salary greater than the average salary of all employees, that is 57,400. Let me check. Yeah. So Bob and Charlie are having greater than 57,400, right? 60,000 and 70,000. Fine.
Okay, let me run all of them simultaneously so you can see how it is working. Is the data visible to you all? So when I aggregate average, when I use average function, the aggregate function for the salary column of employees table, it is giving me the average salary of all the employees, like adding all of them and then divide by 5. Okay, so we get a number from the inner query, that is a sub query. Okay, afterwards what it does, it take all the employee names from the employee table after comparing each salary with that average salary. If the salary is greater than that average salary, it takes the employee name from here. These two. Getting? Any questions in this? No. Okay. Do we need to see it again? No? Okay, fine. Let me go further then. So here I am using this operator, right? That is the greater than symbol, because I need the name of employees who are more than the average salary. Now, find the names of employees who work in the IT department. Okay, so first I need to find the department ID for the department name IT, correct? So I need to write a query for this table. What will be the query? I need to find the department ID. Just because I don't have department name in the employees table, but I want the name of employees from the employees table with the IT department. Okay, so I can't see the data here for IT department. I first need to go to the department table for IT department, need to fetch the department ID for the corresponding department name IT, right? So I have to write select department ID from departments table where the department name should be equals to IT, right? So what should I get here? Department ID as 2, right? And then I need to write an outer query to select the employee names from the employee table where department ID should be equals to what? Should be equals to 2, right? So we can use in also here, or we can use equals to also, right? Okay. First run this inner query to understand how we get the department ID from the departments table. So the department ID 2 is corresponding to the department name IT. Fine. And the employee names, to fetch the employee names, we need to run this whole query. Bob and David are the employee names with the department name IT. Ma'am, Okay. don't we write in when we have to match multiple values? Like, isn't it Yes, better yes. to write So, equal yeah, to? yeah, we can, yes. If there are, this is not the scenario where we can have multiple department IDs, Right. but we can use it in also here for a single value. Okay. Okay. So both of them, the above one and the second one, both of them are similar. Ma'am, This we can do. Both are the, Go ahead, Tapas. if we have to fetch the information for more than one departments, like if we here also have to fetch the information for HR department also, then we could write comma along with IT, comma HR, like this. And you first need to take the department IDs from here, right? Two department IDs, how to mention two department IDs? If you want to mention it here in the employee names, then it will be IT and HR, right? It will be department IDs only. Okay, but if you Only? want here in the department name, you can put in here also. Put it in. Okay, you can put in here also. In IT and
Comma. Okay, comma. Okay, If you got it. want to use and, then you don't need to use in here. Okay, then you need to use equals to. Okay, okay. Yeah. This and this. So Okay, this is the syntax of in bracket and the values separated by comma. okay. Fine. Now the subquery in insert. Okay, तो अभी हमने ऊपर देखा तो जो हमने सबक्वेरी के एग्जांपल्स देखे उसमें वो सेलेक्ट में यूज कर रहे थे, मतलब कि डेटा को फेच करने के लिए सबक्वेरी का यूज कैसा होता है, कैसे होता है, वो हम देख चुके हैं। अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है हमारी टेबल में, तो हम सबक्वेरी का यूज कैसे करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, अभी 6th रिकॉर्ड इसमें जाने वाला है और एम्प्लॉय का नाम होगा फ्रैंक और उसका जो डिपार्टमेंट आईडी होगा वो हम यहाँ से फेच कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट है। सो वी डोंट नीड टू गिव द डिपार्टमेंट नेम इन द एम्प्लॉयज टेबल, पर हमें पता है कि जो डिपार्टमेंट नेम है वो फाइनेंस है, ठीक है, फ्रैंक का। ओके, सो हम डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी फेच कर रहे हैं फाइनेंस का और फिर यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं हमारे वैल्यूज में इंसर्ट में। ओके, so in this insert query we are inserting one record in the employees table. We are giving the values as 6 as employee id, Frank as employee name, department id we don't know, but we know the department name. The department name is finance, so we are fetching the department id from the departments table for the department name finance. Okay, and then we are giving the salary here after giving the department id from this query. Okay, मैम okay, so the department id for finance is 3, so I run this query. आपको एक चीज यहाँ पे I get प्लीज ऐड department id 3. Fine, let me run this whole query. Is someone saying something? Let me complete. 1 second, I will take your query. Okay, now let's see the data. There should be 6 record in employees table with one more employee named Frank, employee id 6 and department id should be 3 as finance. Yeah, so you can see the 6th record that is inserted newly by a subquery, right? Yeah, who is saying something? मैम मैं कह रहा था आपको एक चीज यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहिए कि पहले सब क्वेरी रन होता है फिर आउटर क्वेरी रन होता है, तो इससे बहुत कंफ्यूजन मतलब क्लियर होगा जिनका भी डाउट है। ये मैंने आपको ऊपर बताया, it is executed once and does not depend on the outer query. ये एक ही बार एग्जीक्यूट, फर्स्ट वन टू बी एग्जीक्यूटेड, सब क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो आउटर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। नहीं, जब पहले आउटर क्यूरी उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं ना क्यूरीज में, करेक्ट outer मैम, query आउटर क्वेरी depending upon the inner query. Is यस anyone मैम, who is having this confusion कि which query will be run initially and then what query will run after but that? until we get the answer from the sub query, Actually it is like recursion. जैसे मेन फंक्शन पहले रन होता है, होता तो पहले मेन फंक्शन ही है ना, वो इंटरनल फंक्शन को ऑर्डर देता है कि तू अपना आंसर निकाल के दे, फिर मैं अपना आंसर, बट वो डिपेंड, हाँ बोल सकते हो एक तरह से। अभी मैं आपको क्यूरी रन करके जब दिखा रही हूँ तो पहले कौन सी क्यूरी रन करके दिखा रही हूँ, जब मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि डिपार्टमेंट नेम हमें फाइनेंस दिया हुआ है लेकिन हमें डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय टेबल में नहीं डालना है, डिपार्टमेंट आईडी डालना है, तो पहले हम उसे फेच करेंगे। तो पहले मैंने कौन सी रन करके दिखाई आपको, इनर या आउटर? इनर क्वेरी। हाँ, तो पहले वही रन होगी, है ना। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि पहले कौन सी रन होगी? चलिए आगे चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ आपका, योर गुड नेम प्लीज। हेलो,
ओके बाय द वे, नो वेज। अभी हम देखते हैं फिर सब क्वेरी अपडेट में, इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द एचआर डिपार्टमेंट बाय 10%। अभी हम क्या चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट में है उनकी सैलरी 10% हाइक हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सैलरी इंक्रीज करनी है जो कि एम्प्लॉयज टेबल में बैठी हुई है। ठीक है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट क्वेरी हमने पहले नहीं सीखी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें अपडेट क्वेरी का सिंटेक्स भी बता दूंगी और ये सब क्वेरी वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपडेट क्वेरी में एक सब क्वेरी यूज कर रहे हैं। ओके, सो सिमिलरली जो हमने ऊपर देखा कि हमें डिपार्टमेंट आईडी नहीं पता था, तो हमने उसे पहले डिपार्टमेंट टेबल से फेच किया। ठीक है, तो ये इनर क्वेरी को हम पहले रन करेंगे। ठीक है, और ये भी ऐसे ही करता है हमारा डीबीएमएस, वो भी इनर क्वेरी को ही पहले रन करता है और फिर आउटर क्वेरी रन होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से निकालेंगे एचआर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी से उसकी सैलरी को सेट कर देंगे 10% हाइक देके। ठीक है, चलिए पहले डिपार्टमेंट आईडी निकालते हैं। डेटा, लेट मी सेलेक्ट दिस होल थिंग। हाँ, तो एचआर डिपार्टमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट आईडी होगा वो 1 होगा। फाइन, ठीक है, फिर हमने अपडेट क्वेरी लिखी, अपडेट एम्प्लॉयज। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल नेम, सेट द कॉलम नेम दैट वी वांट टू सेट, कि हमें कौन से कॉलम को सेट करना है, मतलब कौन से कॉलम को अपडेट करना है। पहले अपडेट कीवर्ड देंगे, अपडेट क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे हमारा टेबल नेम आएगा, उसके बाद सेट होता है कीवर्ड, फिर कॉलम नेम, और फिर हमें जो भी वैल्यू उसमें देनी है। ठीक है, तो अभी हमें हमारी सैलरी को 10% हाइक देना है, सो वी कैन राइट दिस एज सैलरी इक्वल्स टू सैलरी 1.10। ठीक है, और फिर उसके बाद वेयर क्लॉज में हम हमारा डिपार्टमेंट आईडी मेंशन करेंगे जो कि इस इनर क्वेरी से फैच होके आएगा जो 1 होगा। ठीक है, चलिए अब इसे रन करते हैं। Fine. अब एक बार देख लेते हैं हमारी क्वेरी को, टेबल को एक बार चेक करते हैं क्या चेंज आया इसमें। हाँ, तो हमारी कुछ सैलरीज जो कि एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, डिपार्टमेंट एचआर से बिलोंग करते थे, उनकी सैलरी 10% से हाई। ओके फाइन, like this one. Fifth row you can see this has been increased because its department ID is HR. So any doubt in this? मैम इसमें एलआईस की भी तो बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी, अगर उसका HR 1 है तो। हाँ, लिखा तो है उसके आगे वन एलआईस। हाँ, तो उसका भी बढ़ा हो। ठीक है, मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया, आप और भी देख सकते हैं, और इसमें अगर और भी मल्टीपल रोज होंगी डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए तो उन सबका बढ़ जाएगा। ठीक है, do you want to see this example again to get a more clarity? Let me increase it for department ID 2, that is for IT. Okay, तो अभी आप देखिए कि IT के लिए पहले डेटा विजुअलाइज कर लीजिए, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ID 2 हमारे पास है IT। ठीक है, तो हम IT के लिए इंक्रीज करते हैं हमारी सैलरी 10%, और IT के लिए हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो बॉब एंड डेविड है। ओके, तो इनकी सैलरी एक बार देख लेते हैं, 60,000 एंड 55,000, तो इनका 10% से हाइक हो जाना चाहिए अगर मैं यहाँ पर IT कर देती हूँ। ठीक है, आप एक बार डेटा देख लीजिए, फिर ये डेटा चला जाएगा, मैं अपडेट वाला क्वेरी चला रही हूँ। ठीक है, सो बॉब एंड डेविड का यहाँ पे चेंज होना चाहिए 60 और 55 वाला। ठीक है, इट इज 2 and 4। ओके, नाउ यू कैन सी 2 and 4, 60 था यहाँ पे, और यहाँ पे 55 के अराउंड था, नहीं कितना था मैं भूल गई, पर बॉब का तो पता है मुझे। ओके, बढ़ गया, वो 10% बढ़ गया। बढ़ गया ना डेविड का?
6,000 बढ़ गया ऊपर, 10% 6,000 ही होता है 60 का, और ठीक नीचे है। वाला किसी ने याद नहीं रखा, ये फोर्थ वाला 50 कुछ था वो, 55,000 था। हाँ तो वो भी बढ़ गया है ना। फिर से चलाएंगे तो फिर से बढ़ जाएगा ये। अभी 66,000 और 60,500 है ना, अभी फिर से चलाते हैं। 66 and 60,500। तो यहाँ पे हो गया है 72,600 और यहाँ पे हो गया है 66,550। ओके चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है आगे बढ़े फिर। अपडेट का सिंटैक्स सबको समझ आ गया? यस। अभी डिलीट में देख लेते हैं सब क्वेरी कैसे काम करता है। delete employees who earn less than the average salary. So this sub query or the inner query we have already seen, it gives us the average salary of all the employees. Okay, so we want to delete the employees where the salary is less than the average salary. Okay, तो पहले मैं एवरेज सैलरी निकाल लेती हूँ एक बार, फिर वो वाले एम्प्लॉयज को डिलीट कर दूंगी। ठीक है देखिए, तो 64,391 है हमारी एवरेज सैलरी अभी। ठीक है, तो 64,391 के लिए मतलब 64,391 से कम जिनकी सैलरी है वो वाले एक बार हम याद रख लेते हैं। ठीक है, 64 ओके, ओनली दिस वन ईव, राइट? और किसी का तो नहीं है ना 64? यस, फर्स्ट वन एलिस। सो एलिस एंड ईव शुड बी डिलीटेड, राइट? फाइन। मैम इससे पहले अपडेट किए थे तो एवरेज सैलरी बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ गया ना। हाँ तो आप बताओ, देखेंगे। क्या आप चीज? डिलीट कीजिए तो देखेंगे क्या। हाँ तो बताइए क्या क्या डिलीट होगा फिर। 64,391 अराउंड हमारा ये आ रहा है एवरेज सैलरी अभी। ओके। फिर कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे बताइए? 5 वाला और फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है ना। फर्स्ट वाला। ठीक, ठीक है। फर्स्ट एंड 5 आर नॉट प्रेजेंट इन दिस। ओके। You can see the employee ID. First and 1 and 5 are not present in this table right now. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? क्योंकि कोरिलेटेड क्वेरीज थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। यस मैम। My screen is visible to you all or not? It's visible. Is it Yes. visible? Okay. Okay. Now, correlated queries. ठीक है, अभी ये देख लेते हैं। A correlated query, subquery references columns from the outer query. It is executed once for every row processed by the outer query. अभी हमने जो बेसिक सब क्वेरीज देखी थी वो आउटर क्वेरी से कुछ रिलेशन नहीं है उसका, वो स्टैंड अलोन भी एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले सब क्वेरी ही रन करके दिखाया, इनर क्वेरी जो था, और फिर आउटर क्वेरी के साथ उसको रन करके दिखाया। ठीक है, तो लेकिन कोरिलेटेड क्वेरीज में क्या होता है कि जो हमारी इनर क्वेरी है वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोरिलेटेड सब क्वेरी रेफरेंसेस कॉलम from the outer query, so it depends on it. It is executed once for every row processed by the outer query. ठीक है, now you can see the syntax from here. Select some table name
select some column names from some table name where exists is a keyword here. Okay, and then some subquery present in this parenthesis. Okay, select some column names where the outer table dot column equals to the inner table dot column. So you can see this subquery is using the outer table column name, outer table dot column. So this outer table dot column is the column that is coming from our outer query. Okay, let's see the example to make it more clear. So here the inner query depends on outer query. Example, we can see list of employees whose salary is above the average salary of their department. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट्स निकालना है. ठीक है, पहले हम एवरेज सैलरी निकालेंगे. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट list of employees whose salary is greater than the average salary of their department. Fine. Okay, now see, select employee name comma salary from employees E1 where salary greater than. So यहाँ तक तो हमारी आउटर क्वेरी है. फिर जो इनर वाली क्वेरी थी वो इससे कैसे रिलेट कर रही है वो देखते हैं. ठीक है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज E2. ऊपर हमने यहीं तक किया था जब हमने एवरेज सैलरी निकाली हमारे एम्प्लॉयज की. ठीक है, सारे एम्प्लॉयज की एक साथ निकाली थी. लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक कंडीशन और लगानी है इसमें कि हम एम्प्लॉयज की सैलरी, एवरेज सैलरी तो निकाल रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज की निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए वो हमारे आउटर क्वेरी में जो एम्प्लॉय टेबल हमने यूज किया है सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए. तो उसका एवरेज सैलरी निकाल के ये हमें देगा. ठीक है, और ये जो अंदर वाला क्वेरी है ये स्टैंड अलोन नहीं रन कर सकता है. मैम E2 और E1 क्या है? Yeah, let me complete. I will tell you. Okay. Because ये अभी स्टैंड अलोन क्यों नहीं रन कर सकता? पहले मैं आपको ऐसे इनर क्वेरी चला के दिखाई थी, स्टैंड अलोन वो रन करेगा. अभी मैं इसे रन करूंगी तो ये एरर देगा. क्यों देगा एरर? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयज को हमने एलियास एक नाम दिया है, E2 दिया है. ठीक है, तो ये इस एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईडी कंसीडर करेगा क्योंकि इसका नाम E2 है. ठीक है, और हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी से कंपेयर कर रहे हैं. तो E1 क्या है, E1 हमारी आउटर क्वेरी वाले एम्प्लॉयज है. ठीक है, क्योंकि हमने इस आउटर क्वेरी वाले एम्प्लॉयज को E1 एक नाम दिया है. ठीक है, तो E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इक्वल्स टू द E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी. तो ये जो हमारी इनर क्वेरी है इट डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी. कैसे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे E1 को यूज कर रहे हैं ना, कंपेयर कैसे करेगा वो. ठीक है, तो E1 जो है वो आउटर क्वेरी में लिखा हुआ है. करेक्ट, सबको समझ आया? E1 E2 क्या है अभी समझ आया? मैम आ तो गया, बट एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. हाँ, इसको हम रन करेंगे तो उससे पहले हम लोग डेटा देखेंगे. ठीक है, ठीक है, चलिए. तो ये कोरिलेटेड कैसे हुआ एक बार उसको देख लेते हैं, फिर इसे रन करते हैं. सो व्हाई इट्स कोरिलेटेड, द सब क्वेरी रिफर्स टू E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी. ये जो हमारी सब क्वेरी है ये E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी को यूज कर रहा है ना यहाँ पे, which is coming from the outer query. E1 is basically defined in the outer query as employees, right? So it runs once for each employee. Okay, so it is not the case for the correlated queries that the inner query will run initially. It will run for each row of outer query. Fine. तो इसमें हमें वो एम्प्लॉयज की लिस्ट मिलेगी जिनकी सैलरी उनके खुद के डिपार्टमेंट के एवरेज से ज्यादा है. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is above the average salary of their department. ठीक है, this will be like this will run like a for loop, right? Okay, like employees is the same table, but we are taking two references, एक E1 बना रहे और एक E2 बना रहे, सेम ही टेबल का दो ऑब्जेक्ट बना लिए. या
Okay. समझने के लिए आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. Okay, means E1 and E2 are the rows, different rows, means like that. Okay. नहीं, E1 and होल E2 are टेबल, tables. होल अच्छा, टेबल जो एम्प्लॉयज टेबल है ना, उसके दो ऑब्जेक्ट बना लिए. जैसे पहला एक बार एक टेबल लिया, उसमें 4 रो थे, तो फर्स्ट रो चलेगी आउटर क्वेरी में, फिर उसके लिए चारों रोज पे इटरेट करेगा जो इनर क्वेरी है, फिर सेकंड रो पे जाएगा, फिर चारों रो के लिए इटरेट करेगा. तो हर रो पे वो चेक करेगा कि चारों रो में कौन सा है जो सेम है. मैम थोड़ा एग्जांपल दिखा दीजिए, डिपार्टमेंट. इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से. हाँ, तो जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल का डेटा है और डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, पर उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा सैलरीज को और डिपार्टमेंट्स को भी, है ना. चलिए देखते हैं. Okay, so this is the whole employees table. Here employee ID 1 and 5 we have already deleted, so it is not present. And this is the department table with 3 departments. और अभी जो मैंने क्वेरी रन की, to find out the list of employees whose salary is above the average salary of their department. So the result will be like this. So employee name Bob को अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देखिए इनके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी 2 है इसका, और कितने इसमें एम्प्लॉयज हैं, बॉब एंड डेविड आर 2 एम्प्लॉयज प्रेजेंट. अगर हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे दोनों का, 72,600 और 66,550, तो जो एवरेज आएगा बेसिकली वो लेस होगा बॉब की सैलरी से, राइट? करेक्ट? आर यू फॉलोइंग द वर्ड्स? Yes, ma'am. Salary of Bob and salary of David, they are both in the same department, right? 2, department ID 2. तो हम ये दोनों सैलरी का एवरेज अगर निकालते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक्स नंबर आता है और वो एक्स नंबर बॉब की सैलरी से कम होगा, फाइन? यस मैम. सबको समझ आया? Yes, ठीक है. ma'am. वो जो एवरेज है वो बॉब की सैलरी से कम है, तो इसका मतलब बॉब की सैलरी ज्यादा है, तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम बॉब हमारे रिजल्टेंट टेबल में है. वही चीज हम अगर चार्ली के लिए कंसीडर करें, सो द डिपार्टमेंट आईडी 3 इज प्रेजेंट फॉर चार्ली एंड वन मोर, यस, फ्रैंक. तो आप देखिए 65,000 और 70,000 इन दोनों का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, 70,000 will be more from the average, so we get Charlie in our resultant table. So if Okay. we are not using that group by or something, we can No, we are not using group by here. we can so it but is then we are we not need to using find group by, out, we we are need grouping to by. write the, sorry, one second, what you are asking? So we are grouping it, right? We are grouping it by the employee ID or something. If you want to use group by, then you write it in that way. Okay, now we are Yes, yes. learning about correlated No, queries. no, तो no, उन्हें no. कैसे Now my लिखते हैं वो question मैं is, so if we are not going to group by, we can use the having only. That having function is there, na? That we can use, right? having That will be will work applied similar to after this group. thing. Having will be applied after group by. Okay, so you can write it any other way. You can write it with a with clause also, like a common table expression. एक डेटा को fetch करने के लिए there are multiple ways, but to fetch it by using correlated subqueries, how we can write, I am telling you. Yes, yes, got it.
ठीक है। मैम ये अभी इसके आपने और भी, ये अभी हाँ आपने जो एग्जांपल दिया है बॉब चार्ली वाला, कोरिलेटेड के लिए दिया है। हाँ जी, ये तो आपको कोरिलेटेड थ्योरी मैंने दिखाया था, ऊपर लिखा हुआ था एक, देखिए देखिए, ये वाला जो क्वेरी है ये कोरिलेटेड क्वेरी है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया ऊपर। और तो फिर अभी मैं आपको ये डेटा दिखा रही थी कि ये वर्क करके हमारे पास रिजल्ट ऐसा क्यों आया। हाँ, तो इसमें ये मतलब ये जो अभी आपने E1 और E2 लिया है, ये इस टेबल में है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है E1 E2, इस जो अभी आपने E1 ये टेबल ही है, ये E1 एक बार एम्प्लॉयज टेबल को इसने कंसीडर किया और E2 सिमिलरली एम्प्लॉयज टेबल को कंसीडर किया। E1 और अगर E2 हमारी एम्प्लॉयज टेबल ही है। मैम अगर अच्छा हम एलियास को ना यूज करें और हम सिंपली लिखे एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो इसमें क्या तो ये कॉम्प्लीट एरर आएगा या देगा। रन करेगा? एरर आएगा ना, नो नो कॉम्प्लीट नो, करेगा ना? एरर आएगा बिकॉज इट इज हाँ एम्बिगुअस टू इट। वो बिल्कुल, नहीं वही समझ में वही। आएगा तो इसलिए हम कि इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज की बात। हम एक ही टेबल से फैच कर रहे हैं ना डेटा। तो इसके लिए हम हम्म, इसको इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों टेबल अलग अलग है, एलियास नाम अलग दे दिया। या करेक्ट। मैम, मतलब इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल E1, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल E1 वेयर सैलरी, मतलब E1 एम्प्लॉय टेबल में जो जहां पे की सैलरी जो है, बस वही चीज उठाओ जहां पे की सैलरी इज ग्रेटर देन, और फिर उसने दूसरा फंक्शन चला दिया। उसने बोला कि सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल E2। अच्छा, सेम एम्प्लॉय सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम, सेलेक्ट दिस कॉलम सैलरी और उसका एवरेज निकाल के फ्रॉम सेम एम्प्लॉय टेबल वेयर कि उस टेबल की जो डिपार्टमेंट आईडी है बराबर पहली वाली टेबल की डिपार्टमेंट आईडी। ये वाला पॉइंट, ये डिपार्टमेंट आईडी वाली लाइन क्यों गया वो? क्योंकि हमें सैलरी को कंपेयर करना है, एक एम्प्लॉय की सैलरी को किससे कंपेयर करना है, उसी की डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से। अच्छा, सेम डिपार्टमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। Can you see this line? ठीक है, List employees ठीक। whose salary is above the average salary of their department. ओके, मतलब दोनों की डिपार्टमेंट आईडी सेम है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट क्लास, डिपार्टमेंट आईडी पहले वाले की और डिपार्टमेंट आईडी दूसरे वाले की जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो बराबर हो, मतलब सेम। I ओके, think most of you people have learned oops just now. आपने यस यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी अभी पढ़ा है क्या सबने? पढ़ रखा है हाँ, अभी मतलब DSA में पढ़ा था मैं। हाँ तो वो अभी पढ़ा है शायद, है ना? अभी तो नहीं पढ़ा है, प्रोजेक्ट भी बनाया है उस पे, तो मतलब दो तीन 3 महीने से 4 महीने हो गए हैं तब से, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यूज आ रहा है उसका। हाँ तो आप लोग सब उसी डायरेक्शन में सोचते हैं, हाँ कॉलिंग हाँ फंक्शन। हाँ, एक्चुअली क्योंकि प्रोजेक्ट ही वही बनाया है ना, क्लास तो उसी डायरेक्शन में आ जाता है दिमाग में ऑटोमेटिकली, इस वजह से। ठीक है, आपको जैसे समझ आ रहा है आप हाँ ऐसे समझिए, बस समझ लीजिए। हाँ, यस मैम, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनी अदर डाउट? मैम आपको एक चीज यहाँ पे ये Can't hear you properly. बोलना, Sorry, can you repeat again? ऑर्डर ऑफ फ्रॉम रन होता है, उसके बाद एम्प्लॉयज विच हैज एरियाज ऑफ E1 and then it goes to where. So that is how the order of execution is in SQL. Hmm. Hmm. This inner query will run for each and every row from coming from the outer query. Got it? मैम तो लाइक, तो हर रो पे जाएगा E2 की, एंड देन वो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट आईडी, जैसे अगर अपन आउटर क्वेरी Hmm. अभी बॉब के लिए चल रही है, तो Hmm. इट विल गो टू दैट टेबल, फिर वो बॉब का डेटा फेच करेगा सैलरी, और फिर उसके बाद वो जाएगा तो चार्ली नहीं है क्योंकि सेम डिपार्टमेंट आईडी, तो उसको स्किप करेगा, और फिर डेविड चेक करेगा, Hmm. और फिर Yes. फ्रैंक को स्किप करेगा, है ना? फिर वो एंड एवरेज मैम, सैलरी निकालेगा, फिर उसे कंपेयर करेगा, फिर हमें रिजल्ट बताएगा। ठीक है? ठीक है? मैम बट रियल लाइफ में ऐसे ये तो बहुत ज्यादा रिडंडेंट है ना, मतलब ये क्या रीडिंग? मेथड, मतलब मैम इस मेथड में अपन बहुत ज्यादा लूप कर रहे हैं। इसकी जगह अगर जैसे बॉब पे जब गया
तभी उसको पता चल गया कि डिपार्टमेंट आईडी 2 का क्या एवरेज है, तो फिर सीधे कंपेयर कर सकते हैं हर बार। फिर से डेविड के नहीं, लिए जब भी वो वो बॉब कैलकुलेट पर करेगा। गया तो उसे कैसे, नहीं एक बात बताइए, जब आपने बॉब का डेटा देखा तो उसे कैसे पता कि क्या एवरेज है? बॉब का नहीं मैम, डेटा देखने से तो सिर्फ सैलरी उसकी ही पता चली ना। नहीं मैम, जब बॉब के लिए फर्स्ट रो के लिए चला, तब तो वो चेक कर लेगा कि डिपार्टमेंट आईडी 2 के लिए क्या एवरेज है। तो जब वो डेविड पे आएगा तो वो फिर से चेक कर रहा है, बट डेविड पे आएगा, अगर वो मेमोरी रख पाते तो फिर तो डेविड पे डायरेक्टली एवरेज से चेक कर लेता हर बार। अब जैसे डेविड के बाद अगर एक और डिपार्टमेंट आईडी 2 के लिए होगा, तो उसके लिए फिर से वो तीनों डिपार्टमेंट आईडी 2 वालों का अब एवरेज उसी फिर के से लिए अभी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन वे ही ऐसा है इसका। हम वही, मतलब अगर अपन अगर एवरेज आप सैलरी सेव इसको करने क्वेरी को लगते हैं। ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, एक क्वेरी करने के अभी आपके पास 5-7 तरीके होते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोरिलेटेड क्वेरी का कंसेप्ट यहाँ पे हम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने इसे ऐसा लिखा है जिससे आपको समझ में आए कि कोरिलेटेड क्वेरी कैसे लिखी जाती है, कैसे यूज होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। आप इसे विथ क्लॉज के साथ भी लिख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे या आप अभी इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई इसमें ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, दूसरे और किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। आप किसी और वे में भी इस क्वेरी का डेटा लेकर आ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन अभी कोरिलेटेड क्वेरी को कैसे लिखा जाता है और वो कैसे रन करता है वो मैं आपको बता रही थी, तो वो सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अभी हम लोग आगे नेस्टेड क्वेरीज पढ़ने वाले हैं। वैसा वो कुछ नहीं होता है उसमें, जैसे अभी मैंने इसमें एक ही सब क्वेरी लिखा है, एक आउटर क्वेरी है, उसमें सब क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं हम, ओके, सब क्वेरी विद इन द क्वेरी, तो वो नेस्टेड हो जाता है, ओके। जैसे नेस्टेड लूप्स होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर हम बात करें, ठीक है। चलिए, अभी इसमें कोई और डाउट है? आप इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, आराम से लिखिए, डेटा निकाल के लाइए, बस डेटा सही आना चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिडंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि कोरिलेटेड क्वेरीज को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे यूज होती है और कैसे काम करती है। किसी और वे में भी आप इसे लिख सकते हैं। We have only 4 records in the employees table and 3 records in the department table. मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ेगा अगर हम किसी और तरीके से लिखें तो, इवन माइक्रो सेकेंड्स का लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई और डाउट है इसमें? नहीं तो फिर नेस्टेड क्वेरीज वी कैन टेक। नहीं नहीं, नहीं रहेगा, क्लियर है। ओके, समझ में आ गया ना कैसे वर्क हुआ, कैसे लिखा गया और यस क्यों मैम, लिखा है? यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई इज इट कोरिलेटेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये देखने की जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं नेस्टेड क्वेरीज पे। ओके, सो नेस्टेड क्वेरीज कंटेन अ सब क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी, ओके। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं हम, इसमें वो सब क्वेरी में भी लिख रहे थे, लेकिन इसमें मल्टीपल सब क्वेरीज होती है, ओके। फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द लोएस्ट सैलरी इन द आईटी डिपार्टमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल में तो डिपार्टमेंट नेम है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें डेटा फेच करने के लिए डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आईटी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी निकालने वाले हैं, वो डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो ये क्वेरी स्टैंड अलोन रन करनी चाहिए, बिकॉज आई कैन सी इट कैन नॉट यूज, it is not using any of the columns or table name that is present in outer part, right? Okay, so department name IT के corresponding department ID 2 हमारे पास आ गया है। अब क्या करने वाले हैं, इस डिपार्टमेंट ID 2 को हम मैच कराएंगे हमारी नेक्स्ट क्वेरी से, और जहां पे भी डिपार्टमेंट ID 2 होगा एम्प्लॉयज टेबल में, वहां से मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करके ये हमें देगा, फाइन, ओके। then we need to select the employee names that are having salary greater than the minimum salary, fine. Okay, so we get Bob and Charlie also here.
wait, let me see the data once. Okay. Okay, lowest salary in IT department. Okay, IT department ID is 2. Okay, so the lowest salary in IT department is 66,550. Right? We have 2 employees here for IT department. One is Bob, that is 72600, and then is 66,500. Okay. Now, find employees who earn more than the lowest salary. तो अभी हम देखेंगे. मैं देखा आउटपुट नीचे है मैम ये सेम डिपार्टमेंट की लोएस्ट सैलरी से कंपैरिजन हो रहा है क्या? मतलब जिस डिपार्टमेंट आईडी नहीं, ये डिपार्टमेंट आईडी आईटी की लोएस्ट सैलरी से कंपैरिजन हो रहा है. अच्छा, खाली हर एक का आईटी से एम्प्लॉय का. हाँ, हाँ हर एक हाँ एम्प्लॉय का. सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की लोएस्ट सैलरी से कंपेयर करें. ठीक है, तो वो था 66,550. So Bob and Charlie are having 72,600 and 70,000. So both of them are greater than 66,550. That's why we have these employee names here in the resultant. ठीक है. Okay, understood? मैम यस मैम मैं कह रहा था एक तो फर्स्ट थिंग अगर जैसे सैलरी में ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं ना, तब फिर वो जो मिनिमम सैलरी आई थी 66 वो भी आ जाती. हाँ, लगा सकते. एंड मैम ऐसे नेस्टेड का क्वेश्चन आएगा तो मतलब डायरेक्टली जैसे इसमें लिखा है सबसे ऊपर वाली लाइन से वैसे फ्लो में लिखना तो टफ होगा ना. अगर हम डिपार्टमेंट आईडी नेस्टेड जो सबसे इनर है उससे स्टार्ट करें फिर उसके ऊपर जैसे आपने ये एक्सप्लेन करा तब प्रैक्टिस तो से आएगा, है ना. हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ आएगा कि कैसे क्वेरी को लिखा जाता है. सिर्फ देखने से, कंसेप्ट समझने से चीजें नहीं आती है. जब हम करने बैठते हैं, जब हम खुद लिखने बैठेंगे क्वेरी, तो प्रॉब्लम आएगी. तो वो चीज कब सॉल्व होगी? जब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा यूज टू हो जाएंगे कि कैसे लिखा जाए. यही चीज पूछ रहे हो ना आप? हाँ मतलब मैं वी ये कैन समझ गया कि ट्रायल कैसे करिए. रन करेगा, बट वही कि जो सबसे अंदर वाला डिपार्टमेंट आईडी आईटी फिर सैलरी फिर ऊपर वाला लिखेंगे तो इजी है फ्लो. बट वही है कि स्टार्ट तो हाँ, ऊपर से ही करना पड़ेगा अपन को. नहीं, आप देखिए, ऊपर में आपको बोल रहे हैं फाइंड एम्प्लॉइज. ठीक है, हु अर्न मोर देन द लोएस्ट सैलरी इन द आईटी डिपार्टमेंट. अब आप देखिए, आपकी एम्प्लॉइज टेबल में डिपार्टमेंट नाम नहीं है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं दे रखा है. ठीक है, तो जब आप सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी यहाँ तक लिख कर बैठ जाएंगे तो आगे क्या करना है सोचेंगे ना. तब समझ में आएगा कि पहले वो लिखना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन. यस मैम. ठीक है, तो जब करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी. राइट, सो यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके. ठीक है, कोई डाउट है अभी यहाँ पे? Ma'am, is there any platform where we can practice online? I told you that W3 schools, it is having Ma'am, labs. Ma'am, it will give some it will tell the this queries and then it will give one example. But if we want to practice questions, then इसके तो आई थिंक मैम लीड कोड में भी होंगे ना एसक्यूएल के जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एसक्यूएल के दिए तो Yes, रहते हैं. yes. I SQL have 50 no is idea. there. I have no लीड idea. I haven't used it. हाँ लीड एसक्यूएल कोड लीड कोड में है. लीड कोड से आप प्रैक्टिस कर सकते You can refer sqlpractice.com. Those, it's good.
Thank you. So when I was learning now, these things were not available. Okay, and this time I am not learning, I am working, so I have less idea about this. Okay, now so ये summary देख लेते हैं. Why is it called nested? The inner subquery gets the department ID of IT. That result is used in a subquery to find the minimum salary. The outermost query compares employee salary with that value, right? As you can see, we have a comparison operator in the outermost query. So we have one more example for nested. If you want to see it, we will. Otherwise, I think the next topic we will take in the next class. So who wants to see this example 2 for nested queries? Okay, देख लेते हैं इसे. Get departments where the highest salary is above the company average. Okay, तो अभी हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए. ठीक है, पहले हमें कंपनी की सैलरी, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा. ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज. ठीक है, इस बार डिपार्टमेंट वाइज क्यों? क्योंकि हमें डिपार्टमेंट्स ही चाहिए, एम्प्लॉयज नहीं चाहिए. ठीक है, हमें इस बार डिपार्टमेंट्स ही चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी कंपनी की एवरेज सैलरी से ज्यादा हो. ओके, सो फर्स्ट वी गेट द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. Fine. Then we get the department ID from the employees grouped by department ID. और जब ये ग्रुपिंग हो जाएगी तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे. ग्रुपिंग के बाद हम देखेंगे उसमें मैक्सिमम सैलरी कौन से डिपार्टमेंट की है. ठीक है, फाइन. एंड देन वी find this department name corresponding to the department IDs that are present in the subquery result. Correct? मैम एक ग्रुप बाय का थोड़ा सा बता दीजिए. तो एवरेज सैलरी का तो समझ में आ गया, जब ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रहा है एम्प्लॉय से तो ये समझ सारे में आ गया. एम्प्लॉयज की. हाँ, उसका एवरेज हो गया. अब ये हम्म. उस एवरेज को किस चीज से कंपेयर, मतलब ये हाँ, वाला. ये क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयज टेबल से. हम्म. ठीक है, और फिर इसने ग्रुप बाय कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी को ही ग्रुपिंग कर दी. ठीक है, और उसमें डिपार्टमेंट आईडी की ग्रुपिंग के बाद इसने मैक्सिमम सैलरी, एक हमारा एग्रीगेशन होता है फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन होता है, वो निकाला यहाँ पे. अच्छा, मतलब कि डिपार्टमेंट आईडी के एक ग्रुप बनाया उसने. मान लो आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट में अगर 2 आदमी है तो उन दो में से जो मैक्सिमम सैलरी है, मतलब उस डिपार्टमेंट की जो मैक्सिमम सैलरी है वो बड़ी होनी चाहिए एवरेज सैलरी से, तो उन्हीं को वो निकाल के देगा, ऐसा कुछ. हाँ, डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहा है ये इस बार. ठीक है, उस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी निकाल रहा है, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की, और फिर उससे कंपेयर कर रहा है. यहाँ से यहाँ पे तो ग्रुपिंग की है डिपार्टमेंट के बेसिस पे, और उसके बाद उसमें से मैक्सिमम सैलरी निकाली है डिपार्टमेंट आईडीज में से. तो इसमें वही डिपार्टमेंट रिजल्ट में आएंगे जिन डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी, मतलब उनमें से जो मैक्सिमम है वो ज्यादा होगी एवरेज से, टोटल के एवरेज. ओके, आ गया समझ. ठीक है, चलिए. So why it is nested? Having clause contains a subquery that calculates the overall average salary. ठीक है, वो हमने देखा यहाँ पे. Having के बाद हमने एक subquery लगाई हुई है. The outer subquery filters department accordingly. और ऊपर वाला जो subquery है ये department को filter कर देगा, है ना, group by करके. ठीक है, these examples. Okay, fine. These are the examples for the subqueries, which included basic subqueries plus nested queries plus the correlated queries. Okay, so I think it is clear to all of you. No answer. Ma'am, can you share that file? Yeah, ma'am, it's clear. Can you share that file of many to one and one to many relationship where you have written that file? Okay, I will share.
What else? Anything else you people want to discuss? Okay. Fair, I can assume that you people know about the relationships in DBMS and about basic subqueries, correlated queries, and nested queries. Yes. No answer? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Great, great. Next class will be on Thursday because we have missed our Saturday's class, the yesterday class, because of your exam. DSA exam was there, right? So Thursday the timings will be 10 a.m. Okay. Okay, okay. Mom, are you sharing the file here in the chat? No. Right now I can't share the file for you, but I will try it after talking to Chaitanya. I need to have the Discord access. Ma'am, can we Okay. keep the classes in the evening session, Thursday wala? Evening? Evening, anytime after 8 o'clock. Normally, No, we it used to will have not be possible. classes on 8 o'clock onwards. No, it can't be possible, huh? Because all others have to be there, right? Everybody from this particular batch is available normally after 8 o'clock. That's why we used to follow the process when we were attending But the I DSA also classes. have to be available, na? Acha, okay, Right? so that's fine. Morning, ma'am, it is a little difficult na, to attend. So are you asking in the weekend or on the weekdays? No, she told that on Thursday she's having the classes. Okay. If you don't want to be available on Thursday, no worries. Thursday is Labour's Day, so I think that it is off for all of us. Yes, yes, it is holiday. Holiday, na? So you Ma'am, people will be available, or is there any issue? no, ma'am, our company follows the different countries' holiday system. So if it is a problem of my own, You are then working in a company? no, that is okay. If I have only one problems, you can continue. I will try to join from my mobile. Okay, great. Yeah, thanks. Okay then. Fine. Any doubt you people are having right now, or we can disconnect? Okay then. Thank you. Thank you, ma'am. Good. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.